Yes. Gayatri, do you want, ma'am, I've got the backup. Veena ma'am had asked me to do that. Yes, yes. okay, Give her the access. okay, I told you, na, if suppose there is some kind of power fluctuation at my end, it cannot happen. The entire lecture is, affected by that. So okay, this is the backup plan that, usually what happens is if suppose that there is some kind of problem, then at least Gayatri, I've made her the co-host as well, and okay, she will be remotely accessing your computer, so that okay, ma'am, yeah. she can do that. Okay. Yes, yes. Okay. Chalo. Okay, so good afternoon, everyone. In the last lectures, we have been completing flooding stress and cold temperature stress, that is freezing stress. Today, we are going to start with drought stress, that is also called as desiccation stress. Now, in this particular topic, you have to study n number of mechanisms that how does the plant tend to overcome this stress. Okay, so in this topic, I want to study how does the damage is caused to the plant due to the stress. Then, what are the adaptations plant or the mechanisms or the strategies what plant take up to tolerate or to avoid the stress, and what are the mechanisms where plant can adapt themselves through those mechanisms, or some gene regulations where they can control, where they can have a control over the stress. Okay, so first we'll go to the introduction. Now see, desiccation stress is what desiccation means: less amount of water, shortage of water, or you may say unavailability of water. If there is unavailability of water, plant tend to develop drought stress, that is desiccation stress. Now whenever there is less amount of water in the plant, the water potential decreases, and due to that the plant gains the desiccation stress. Now it is a complex type of a stress, you could say, or it is a multi-dimensional stress, because here there is no a peculiar effect on the plant. ऐसा कोई एक इफेक्ट नहीं होता है जिससे पता चलेगा कि उसको ड्रॉट हुआ है या उसको स्ट्रेस है ड्रॉट की वजह से, बट ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, इसीलिए उसको मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेस कहते हैं. सो देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर इफेक्ट कि बाय सीइंग दिस पर्टिकुलर इफेक्ट यू मे से दैट plant is undergoing desiccation stress. There are n number of effects shown by the plant during desiccation stress. That's why it is called as multidimensional stress. Now this stress is much more seen, okay, when there is high temperature and solar radiations are there. So whenever there is high temperature, the water is being lost due to transpiration, and if there is no water in the soil, enough water is not there, and still the water is lost in the form of water vapor through transpiration, then also this is sort of a very constrained stress, you can say, where the plant is undergoing a huge change in the plant body. Okay, so the very first thing happens is it will inhibit the photosynthesis, because as soon as there is uh, shortage of water in the plant, it will tend to close the stomata, and then if stomata gets closed, there is no exchange of gases, carbon dioxide and oxygen, and because of that the photosynthesis will there will be more effect on photosynthesis. Okay, so there will be photo inhibition of photosynthesis. Photo inhibition ke bare mein in the last lectures also I've explained you how photo inhibition takes place, that is inhibition of the photosystems where from where the photosynthesis starts. Okay, now as I said, it does not have any particular effect. There are n number of effects which plant shows when it is undergoing the desiccation stress, but there are n number of genes in the plant which gets regulated, okay, and can tolerate the stress. So one of the part which we are going to study further is how does the gene regulation takes place to overcome this desiccation stress. Okay, so what kind of damages does plant undergo during this particular stress is plant will show effect on the whole growth of the plant, then water relations, that is transportation, then mineral nutrition, because if there is shortage of water, the minerals could not be absorbed from the soil, so mineral nutrition पे भी effect होगा, photosynthesis, respiration, total growth arrest can take place, and stomatal closure. Stomatal closure and total growth arrest is the immediate cause of the stress. Like if there is desiccation,
or there's drought conditions in the field, the very first thing happens to the plant, or the very first thing plant undergoes is stomatal closure and total growth arrest, means the growth stops or slows down. Now, as soon as there is drought conditions coming up at that time, or there is unavailability of water in the plant will undergo growth arrest, will stop the growth or will slow down the rate of the growth. But as soon as the stress is relieved, again the plant will come to its normal position. Means you may say that plant is undergoing somewhere a dormancy state. As soon as it knows, it gets to know that it is like it is not having much amount of water, it cannot absorb much amount of water because land is not, or soil is not having water. At that time it will slow down the rate of growth. But as soon as the stress is relieved, there is water coming into the field and then plant can absorb it, the normal function of the plant can take place. Generally in the root system, whenever there is stress, the plant will not show any growth. The growth is too slow. But as soon as the stress is relieved, the meristematic region of the root will function normally and give a very rapid growth to the root system. Another damage is caused to the xylem vessels, or the path where the xylem is been situated from where the water is conducted to the plant parts. So in that xylem vessel, there will be embolisms. Last time also I've said embolisms is nothing but the blockages. Okay, so there in the last lecture, it was a blockage of a water. Here the blockage is of air. So there will be air bubbles trapped inside the xylem vessel, which will not allow the water to be transported from roots to the stem. So xylem के अंदर air trap हो जाएगा and there will be blockage caused into that vessels. Okay, that is called as xylem cavitation. Okay, so there will be an air cavity formed inside that xylem vessel, and it will lead to the it will affect the water transport, which is going to transport the water. Like when the roots are going to transport the water to the shoot, it will not take place at that time. So means it is going to reduce the hydraulic conductance. Conductance means conduction of water. So water conduct nahi hoga us time pe. Another damage is caused, that is stomatal closure. See, we have studied how does stomata gets open, like guard cells, how does they open the stoma, there is a space, and how does the stoma leads to the closure of the pore, stomatal pore. Okay, so whenever the guard cells are turgid, at that time the stoma opens up. Whenever the guard cells are flaccid, the stoma closes. Okay, so here there is no water only. If there is no water, then the guard cells are not going to be turgid, they're going to be flaccid all the time. If they're flaccid, the stomatal pore always closes. And because the stomatal pore is closed, there will be no exchange of carbon dioxide and oxygen. So it leads to inhibition of photosynthesis. Okay. Now, this particular damage is not only for particular systems, but also there are different systems which are being affected by this. One of the thing is for respiration also. Now, due to the stress, there will be either increase in the respiration rate or decrease in the respiration rate. Now, whenever there is decrease in the respiration rate, it leads to the reduction in the metabolic rates, which will lead to the reduction in the ADP generation. If ADP is not formed, ATP is also not going to be formed. Okay, that is one damage. Another is, there is sometimes seen that it is observed that there is increase in the respiration rate. Now, why it is increase in the respiration rate? Now, pay attention. See, there is one common thing in the plant while this particular desiccation stress. That is, whenever there is electron transfer taking place in the plant, means माइटोकॉन्ड्रिया में देखा होगा तुमने ETS pathway होता है. Okay, electron transport chain or electron transport system. Okay, at that time when the electrons have been transferred from different electron carriers such as cytochromes or ubiquitin, or so many electron carriers are there. Okay, so whenever the electrons are being transferred to that electron transport system or the chain, at that time there are n number of reactive oxygen species generated. जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कैरी करके लेकर जाएंगे, अगर तुमने पूरा ETS नॉर्मल ETS पाथवे देखा होगा तो NADPH जो है वो रेड्यूस होता है NADP में, और वो जो या NADH2 है वो NAD में रेड्यूस होता है वो, और जो हाइड्रोजन है H2 है वो स्प्लिट होता है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में, और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं
मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैरी होंगे थ्रू द डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस सच एज साइटोक्रोम्स एंड यूबिक्विटिन एंड ऑल, एंड उसको कैरी करते हुए इलेक्ट्रॉन्स एक्सपेल होंगे और जाकर वो लोग ऑक्सीजन को ट्रैप करेंगे। फिर ये जो प्रोटॉन्स है वो ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, और इस पूरे इलेक्ट्रॉन सिस्टम में one NADH2 can give 3 ATPs and one FADH2 if enters into the pathway can give you 2 ATPs. Okay, this is the normal pathway. In this pathway only जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता रहेगा उतना ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होता रहेगा, और अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होता है तो क्या होगा, सेल डैमेज हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या करेंगे, सेल में लिपिड पर ऑक्सीडेशन करेंगे, प्रोटीन कार्बोनिलेशन करेंगे, जिसके वजह से सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन विल बी डैमेज्ड। ओके, सो अगर प्लांट को इस स्ट्रेस से बचना है, इस डैमेज से बचना है कि ज्यादा से ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेट ना हो, तो व्हाट द प्लांट विल डू, इट विल टेंड टू reduce the generation or it will tend to prevent the generation of ROS. अब ROS जनरेट किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू ट्रांसफर, बिकॉज ऑफ दैट द ROS इज जनरेटेड। तो प्लांट क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को कहीं ना कहीं कम करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ROS जनरेट ना हो। ओके, मतलब पूरी तरह से जीरो ROS तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, क्योंकि ATP इज आल्सो जनरेटेड नो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं होंगे तो ATP नहीं जनरेट होगा, अगेन द प्लांट विल go to its dormant stage. Okay, तो प्लांट थोड़ा बहुत तो फंक्शनैलिटी होना चाहिए उसमें, इसीलिए it will prevent the generation, it will slow down the rate of generation of ROS or the electron carrier. So as soon as there is reduction in the electron transport components, there'll be like it will prevent the generation of ROS. Okay, so कैसे भी करके reactive oxygen species को बचाना है, तो one way is you can reduce down the electron transport chain. और reduce कैसे करोगे, there are a number of mechanisms where plant will tend to carry those electrons but will not carry through the whole carriers. सारे see there are 4 complexes in the electrons transport system. तो कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई mechanisms है जहां पर electrons are transferred from complex 1 to complex 2. Now they are not going to transfer to complex 3 because 3-4 में जाएंगे तो और ज्यादा ROS जनरेट होगा। ओके, ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेट होते रहेंगे, इसीलिए दे विल एस्केप दैट 2 स्टेप्स एंड दे विल डायरेक्टली गो टू द ऑक्सीजन एंड देन ATP इज फॉर्म। ओके, लेस नंबर बट ATP इज फॉर्म। मतलब क्या है, उनको कैसे भी करके कुछ स्टेप्स को एस्केप करके आगे बढ़ना है ताकि ROS का जनरेशन कम होते रहे। ओके, दैट इज व्हाट द कंडीशन। सो दिस आर द डैमेजेस। नाउ विल सी हाउ द प्लांट अडैप्ट्स टुवर्ड्स दिस डैमेजेस। ओके, now there are 2 types of adaptations, morphological or life cycle adaptations and physiological adaptations. So first we'll see what are the morphological adaptations. There are 3 types of plants when it undergoes desiccation stress. One is desiccation escapers, that is drought escapers, they will escape the condition. Other is desiccation avoiders, they will avoid the condition. And the third is desiccation tolerators, they will tolerate the stress and they will tend to develop some mechanisms through which they can grow in that particular stress condition. Okay, so when you talk about drought escapers, they wanted to escape the condition. Now how they will escape the condition is, the very first is they will not show any adaptation. So there are some plants which will never show any adaptations. अगर adaptation नहीं तो मर जाएंगे ना, तो it is not like that. Whenever they tend to, like they got to know कि there is unavailability of water or there is shortage of water in the soil, that the roots cannot absorb the enough amount of water, at that time this particular plants will show a rapid growth or very like into a rapid manner, they'll just finish off their life cycle. मतलब stress होने को start हुआ नहीं कि ये लोग अपना फटाफट life cycle खत्म करके they will like be like after the life cycle is over they'll die. Okay, means it does not want to undergo that stress itself, they want to escape the condition. So in escaping those conditions they will show their rapid growth, will complete their life cycle. That is one kind of plant. Another plants are where they will show some plasticity. Now plasticity is nothing but change in the characters or morphological characters according to the environmental conditions. One of the plasticity I'll tell you, heterophyly. Heterophyly, hetero means different, phyly means structure of leaves. अगर 2 plants है like
एग्जाम्पल देती हूँ मैं, कोरिएंडर। सबके घर में कोरिएंडर आता है, कभी तुमने देखा होगा कोरिएंडर का नॉर्मल लीफ का जो शेप होता है वो ऐसा थोड़ा फ्लावर्ड शेप का होता है। एंड इफ यू सी देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कोरिएंडर इन दैट ओनली, पूरे वो कोरिएंडर के बंडल में ही यू सी सम लीव्स व्हिच आर लाइक वेरी थिन, शेपू जैसा उसका लीफ होता है। ओके, now why it is like that? See, whenever coriander is grown into a normal condition, normal average water, average minerals, and everything which is very much favorable to the coriander plant, at that time it will develop very normal leaves. Okay, but whenever the plant, the coriander plant is having large amount of water or less amount of water, it will not die because of that. It will tend to develop different structures of leaves so that in that particular condition they could survive at least. तो सर्वाइव करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अपने लीव्स का स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं. अगर ब्रॉड लीव्स होंगे नॉर्मल कोरिएंडर जैसे तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ज्यादा एक्सचेंज होगा, ज्यादा वाटर लॉस होगा. इसीलिए दे विल डेवलप स्मॉल थिन थ्रेड और फाइबर लाइक लीव्स. ओके, जैसे शेपू में होता है. So due to this, what happens? The transpiration rate is less, the photosynthesis rate is also less. So they can, at least in the stress condition, they can survive. That is called as developmental plasticity. That comes under desiccation escapers itself. Okay. Now, when you talk about desiccation avoiders, means they are going to avoid the drought conditions. So how do they avoid the drought condition? Is they will ensure that most of the water is being saved or stored inside the plant. So if there is no water in the soil, thoda bahut jo bhi pani hoga, they will tend to absorb it and they will try to store that water in the leaves, or they will show some adaptations where they're going to store the water. Okay, and the very common plants which shows this kind of adaptations is xerophytic plants. Now these xerophytic plants have different types of what you can say adaptations or modifications where they tend to absorb the water in those particular plant parts. Now the very first is thick cuticle. Leaves will have thick cuticle so that the transpiration rate is low. The what you can say, most of the times whenever the water has been lost or whenever the plant is going to damage, so whenever there is thick cuticle, the damage cost to the plant is very much less. Okay, then second is sunken stomata. So sunken stomata is, you also know, it is because of low rate of transpiration. Sunken means stomata बहुत ही ज़्यादा अंदर की तरफ होता है. Okay, then they'll show leaf rolling due to what the transpiration rate is low, photosynthesis rate is also low, the water is not lost. Then there is no effect of high temperature onto the plant. That's why they'll show leaf rolling. Then reduction in leaf sizes. Sometimes, as I said, in plasticity also, I cannot say in plasticity leaf is reduced, but the leaf structure changes. Here, the leaf size is changed. Whenever the plant undergoes drought conditions, the leaves will not grow to its normal size. The size will be decreased. Then photosizing stem, that is phylloclade. If you have seen cactus, okay, so they show the stem into a bulbous structure and the spines are nothing but the leaves which are converted to spines to store enough water inside them. And then increase in hydraulic conductance. See this. This is what? This is the thick cuticle. If you see this, cuticle is so thick that it will never ever allow the plant to get damaged or dry up. Due to this cuticle, the leaves are not going to dry up. Then this is the leaf rolling. Whenever there is drought condition, not enough amount of water in the field, at that time the leaves are being what you can say, rolled in this manner. This is phylloclade, cactus or aloe vera, any xerophytic plant. If you see, the stem undergoes a bulbous structure where they store the water, and these spines are nothing but the leaves which are converted to spines to store more amount of water. Okay. Then this is what is sunken stomata. If you see here, the stomata is bit inside, which will inhibit or which will prevent the loss of water. Okay. Then if you see here, they have given all together how does plant try to what you can say, adapt towards the conditions. Okay, so here they have shown
the waxy layer covering fleshy leaves to help store water. So in aloe vera, if you see there is a waxy coating, so because of that there is no water loss from the water. Then the roots grow very deeply inside the soil, so that the water, wherever the water inside the soil is there, they could absorb it. Okay, here also there are leaves which are converted to prickles or spines, okay, so that they could store water. Okay, even these prickles will never allow any animal to engulf this plant, because whenever it prickles to the mouth, so पहली बात तो ये वाटर स्टोर करता है, एंड एनिमल्स नो कि इसके अंदर वाटर है, बट वो खाने को नहीं आ सकते बिकॉज उसके ऊपर बहुत सारे स्पाइन्स होते हैं. But see the root system here, root grows horizontally here. Okay, so if it cannot grow too deep, so it develops a adaptation or modification, it shows where it grows horizontally. So यहाँ पर जहाँ पर भी पानी होगा साइड में, वहाँ पर it can absorb the water. Then here if you see the leaves are not been formed, or they have been converted to spines to prevent the transpiration, and the root will show some storing organs like this, which will store water and the storage food material. Okay, so this is what is the morphological adaptation. So thick cuticle in xerophytic plants, then leaf rolling, then phylloclade conditions, that is photosynthesizing stems, then waxy coating, spines, leaves which are converted to spines, the root system, how it develops, and sunken stomata. Okay, this is for desiccation avoiders. So from these all modifications, they're going to avoid the condition. Okay, they are still in drought, but they're avoiding the conditions. And if you talk about escapers, there are some plants which could escape through the formation of developmental plasticity, different kind of structures and leaves, or there are some plants which will finish up their life cycle within no time when the drought comes up, and then they will die off. Okay. Now we'll go to physiological adaptations. How does physiologically plants tend to adapt themselves? Now, when you talk about physiological adaptations, it is a like जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला, they wanted to prevent the ROH generation. कैसे भी करके उनको reactive oxygen species के generation को रोकना है. Okay, और वो कैसे कर सकते हैं? They have n number of mechanisms. The very first is photo inhibition. वो लोग फोटो सिस्टम्स को इनहिबिट कर देंगे ताकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा ना हो. फोटोसिंथेसिस ज्यादा नहीं होगा तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ज्यादा जनरेट नहीं होंगे, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ रिएक्शंस वेयर द electrons are being carried and reduction is taking place, and because of that there will be generation of reactive oxygen species. So they want to inhibit the process. So one of the mechanism they can inhibit or they can stop the generation is through photo inhibition. Okay, second is mitochondria. Now mitochondria plays a very much important role when it comes to desiccation stress, because mitochondria tend to dissipates the NADPH during the formation of or during the light reactions. जब भी photosynthetic light reactions होते हैं, at that time mitochondria NADPH dissipate करता है. ये NADPH जो dissipate किया हुआ है mitochondria ने, ये माइटोकॉन्ड्रिया के ही इनर मेम्ब्रेन, इनर साइड ऑफ द इंटरनल मेम्ब्रेन स्पेसेस में जाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये जो दिख रहा है तुम लोग को, दिस इज इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेयर देयर इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम टेकिंग प्लेस. सो ये जो भी NADPH रेड्यूस, मतलब ये जो NADPH है जो माइटोकॉन्ड्रिया एक्सपेल आउट करेगा, वो इस पूरे फेज में जाएगा. क्यों? क्योंकि जब वो कॉम्प्लेक्स 1, complex 2, that is ubiquitin, complex 3 cytochromes, complex 4, these are also cytochromes, जब यहाँ से वो NADPH का जो रिडक्शन किया हुआ हाइड्रोजन है, मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास होंगे, at that time there will be what you can say generation of ATP, as well as there will be water molecule formed. Okay, but with this at the same time there will be reactive oxygen species also formed. तो जब भी माइटोकॉन्ड्रिया NADPH डिसिपेट करेगा लाइट रिएक्शंस की वजह से बना हुआ, तो वहां पर जब वो पास होंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो देयर आर एंजाइम्स लाइक NADPH डिहाइड्रोजिनेसेस. सो ये क्या करेंगे, यूबिक्विटिन को रिड्यूस कर देंगे. अगर यूबिक्विटिन को या यूबिक्विनोन को रिड्यूस किया तो आगे का इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी नहीं होगा. सो इफ देयर इज रिडक्शन ऑफ यूबिक्विनोन, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन बीइंग फर्दर कैरिड टू कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड फर्दर वेज. सो अगर आगे इलेक्ट्रॉन्स कैरी ही नहीं होने वाला है तो ATP फॉर्मेशन भी नहीं होगा.
ओके, प्रोटॉन ग्रेडियंट भी नहीं होगा, एटीपी फॉर्मेशन भी नहीं होगा। ये एक एडेप्टेशन है। अगर एटीपी नहीं बना और अगर इलेक्ट्रॉन्स आगे कैरी नहीं हुए कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 में, तो फिर आरओएस जनरेशन भी नहीं होगा। ओके, दैट इज वन मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ, इसके पास दूसरा भी मैकेनिज्म कि कैसे वो प्लांट को हमेशा रोके कि इट शुड नॉट प्रोड्यूस द what you can say ROS. So it will have another pathway to be followed or employed, that is alternative oxidase pathway. Now ये alternative oxidase pathway में होगा क्या, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो जनरली पास कहाँ से होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, फिर वो आगे जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और दे विल प्रोड्यूस द मेटाबॉलिक वाटर। बट in alternative oxidase pathway, the electrons are going to carry forward from complex 1, complex 2, but will not get transferred to complex 3 and complex 4. complex 4 के बाद जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं ना, ओके, तो यहां से complex 1, complex 2 and then they will directly go to complex other complexes, escaping complex 3 and 4. So they will bypass these two complexes. Okay, if they want to bypass these two complexes, there are not much ROS being generated because of that. Even it is said that whenever the electrons are being carried from complex 1, complex 2 and directly then further escaping these 3 and 4, at that time the ATP is not formed, because जब तक वो पूरा इलेक्ट्रॉन कैरियर मतलब सारे कॉम्प्लेक्सेस से मूव नहीं करेगा तब तक एटीपी नहीं बनेगा। तो जब वो लोग 3 और 4 को एस्केप कर देते हैं तो एटीपी नहीं बनकर इंस्टेड ऑफ एटीपी देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ थर्मल एनर्जी। दैट इज वन थिंग। ओके, सी प्लांट को दोनों तरफ से ये है ना प्रॉब्लम है कि अगर उसने इलेक्ट्रॉन्स कैरी किए तो देयर इज आरओएस जनरेशन, और अगर आरओएस जनरेट हुआ तो सेल को डैमेज, सेल में डाई बिकॉज ऑफ दैट। ओके, सो दूसरा वे से क्या उसको प्रॉब्लम है, अगर इलेक्ट्रॉन्स कैरी नहीं हुए तो एटीपी भी नहीं बनेगा, तो कहीं ना कहीं इट हैज टू मैनेज। ओके, सो हाउ इट विल मैनेज, इट विल नॉट प्रोड्यूस आरओएस, बट अगर उसको कम एटीपी मिल रहा है इसके थ्रू तो भी चलेगा, मतलब वो कम एटीपी जनरेट करके आरओएस जनरेट नहीं करेगा। Another mechanism is uncoupling proteins. Now uncoupling proteins क्या होते हैं, these are carriers or transporters. तो जब भी मेम्ब्रेन से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो अनकपलिंग प्रोटीन्स भी वहां पर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये अनकपलिंग प्रोटीन्स जब इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे तो at that time they will tend to decrease the generation of or tend to prevent the generation of ROS. Okay, so uncoupling proteins are, it is like they have a proton channel, or they have they are called as transporters, which will transport the electrons from one particular complex to another complexes or another proteins in the membrane. But due to uncoupling proteins, or whenever the electrons are going to transfer through uncoupling proteins, at that time there is a prevention of ROS generation. Okay, now another mechanism what plant follows is through TCA cycle. Now in TCA cycle there are n number of reactions taking place in which NADPH is formed. Now if there is more amount of NADH generated at that time, it has to undergo electron transport system. जितना ज्यादा NADH बनेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाना पड़ेगा उसको। अगर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है तो फिर एटीपी भी बनेगा और आरओएस भी बनेगा। तो प्लांट चाहता है कि एटीपी बने बट नहीं चाहता है कि आरओएस बने, तो इसीलिए टीसीए साइकिल कुछ मॉडिफिकेशन शो करेगा जिसकी वजह से दे विल नॉट जनरेट आरओएस। एंड व्हाट काइंड ऑफ एडेप्टेशंस डज दिस TCA cycle shows? One of the adaptation is synthesis of gamma amino butyric acid. Okay, so they will produce gamma amino butyric acid. Because of the production of gamma amino butyric acid, TCA cycle में दो steps bypass हो जाते हैं। मतलब अगर पूरा TCA cycle तुम्हें याद है तो citric acid gets converted to cis aconitate, then isocitrate, then alpha ketoglutarate or oxoglutarate, then succinyl CoA, succinate, fumarate, malate and oxaloacetate. Okay, so in TCA cycle whenever
this GABA is formed, that is gamma amino butyric acid is formed, at that time it will bypass those two steps. कौन से दो steps वो pass करेगा? वो है oxoglutarate to succinate and oxoglutarate to succinyl CoA and succinyl CoA to succinate. ये दो steps escape करेगा. ये दो steps में ही NADH बनता है. तो ये दो steps अगर escape हो जाते हैं तो NADH नहीं बनेगा, और अगर NADH नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज्यादा नहीं होगा और ROS जनरेशन भी नहीं होगा. ओके, अब ये जो गैमा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड है ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगेगा, क्योंकि प्लांट अभी भी स्ट्रेस कंडीशन में है. तो TCA साइकिल ये मॉडिफिकेशन कुछ टाइम के लिए रखेगा जब तक स्ट्रेस है प्लांट को. तो ये क्यों एक्यूमुलेट होता है, किसके वजह से एक्यूमुलेट होता है, या कौन इसे सिंथेसाइज करता है? इट इज बीन यील्डेड फ्रॉम सक्सिनेट एंड बीन formed because of proline and glutamate. प्रोलिन, ग्लूटामेट और सक्सिनेट जो माइटोकॉन्ड्रिया में है, इन तीनों की वजह से अल्फा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड बनता है. और प्रोलिन और ग्लूटामेट कहां से आया प्लांट के अंदर? जब भी स्ट्रेस कंडीशन होगा तब प्लांट क्या करेगा? प्रोलिन और ग्लूटामेट को एक्यूमुलेट करने को या सिंथेसाइज करने को स्टार्ट करेगा. अगर वो सिंथेसाइज हो गया तो वो ऑफ कोर्स गैमा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा, और उसके प्रोडक्शन की वजह से दो स्टेप्स एस्केप हो जाएंगे TCA साइकिल में, जिसकी वजह से NADH नहीं बनेगा, और अगर NADH नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं होगा, एंड इट विल लीड टू द प्रिवेंशन ऑफ ROS जनरेशन. सो आई गेस दिस, सी इट इज लिटिल कंफ्यूज, आई कैन नॉट से, बट थोड़ा डिफिकल्ट है, बट तुम जब पढ़ोगे ये तो तुम्हें पता चलेगा. इतना याद रखो कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो वो ROS जनरेट करते हैं, और अगर ROS जनरेट हुआ तो प्लांट में get much more damaged because of that. So they don't want that they should generate ROS. So there are mechanisms कि कैसे वो ROS को कम किया जाए. Okay. Now another mechanism to what you can say undergo the prevention of ROS is they will generate some antioxidants or antioxidant enzymes. कुछ antioxidants बनेंगे जो क्या करेंगे? स्केवेंज करेंगे ROS को. ओके, तो ये antioxidants, see sometimes it is harmful also to the plant, but still plant has to go under some mechanisms where the plant should not get the damaged. Okay, so इसीलिए they will develop some antioxidants such as ascorbate, alpha tocopherol, carotenoids, then some enzymes such as SOD catalase, ascorbate peroxidase, glutathione reductase. Okay, जो ROS को detoxify कर देगा. ठीक है, तो there is mechanism कि how does these particular what you can say antioxidants play an important role. Now there is one antioxidant called methionine sulfoxide reductases. Okay, तो ये एक एंजाइम है जो थायोरिडॉक्सिन को यूज करता है जब भी उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है. देखो, डेसिकेशन स्ट्रेस विल लीड टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो व्हेनेवर देयर इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो ये एंजाइम क्या करेगा? थायोरिडॉक्सिन को यूज करके फिर आगे का प्रोसेस करेगा जहां पर वो प्रोटीन्स को डैमेज नहीं होने देगा. तो वो see whenever there is oxidative stress the proteins get damaged. So whenever there is oxidative stress at that time this particular enzymes will use thioridoxine which will never ever damage the proteins which are being synthesized inside the plant. Okay, now how does this takes place is, if you see here, this is photorespiration. ये क्लोरोप्लास्ट है, ये पेरोक्सिसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है. ठीक है, अब रुबिस्को इज द एंजाइम. फोटोसिंथेसिस अगर याद है तो RUBP carboxylase. अगर रुबिस्को is a very thermolabile enzyme. Okay, so whenever there is a high amount of carbon dioxide it will take up the carbon dioxide and it will go for the C3 cycle to be like C3 cycle in the plant, और उसकी वजह से क्या होगा? फूड सिंथेसाइज हो जाएगा. But there is whenever there is less amount of carbon dioxide, so ultimately there is oxygen more in the plant. So this enzyme now will do oxygenation process. तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो इट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ C3 साइकिल, दैट इज द नॉर्मल कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस. बट जब भी ऑक्सीजन ज्यादा होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन ज्यादा लगने लगेगा प्लांट को. तो ऑक्सीजन जब ज्यादा होगा तो इट विल अंडरगो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस. सो व्हेनेवर इट इज गोइंग अंडरगोइंग ऑक्सीजनेशन प्रोसेस, एट द टाइम रुबिस्को विल टेंड टू फिक्स द ऑक्सीजन. इट विल प्रोड्यूस
phosphoglycerate. This phosphoglycerate will be transferred to peroxisome, where it is going to get converted to glyoxylate and glycolate, and this glycolate further undergoes further is transferred to mitochondria, where glycine is produced, and then the whole process takes place of photorespiration. हमारा पॉइंट यहाँ पर फोटोरेस्पिरेशन सीखने का नहीं है, हमारा पॉइंट ये है कि जो भी ऑक्सीजन जब भी इसके अंदर आएगा तो वो हाइड्रोजन, सी whenever the oxygen is getting added into the reaction, it will somewhere produce the hydrogen peroxidase enzyme. Now this hydrogen peroxidase is also one of the ROS species which is going to damage the plant. So यहाँ पर क्या होगा, the ascorbate peroxidase enzyme will come. It will, so this hydrogen peroxide with ascorbate will react in the presence of ascorbate peroxidase enzyme and will produce monodehydroascorbate, and water is lost. So H2O2 plus ascorbate, ये दोनों react होंगे in the presence of enzyme APX. APX क्या है? Ascorbate peroxidase enzyme. Okay? तो ये एंजाइम की वजह से एस्कॉर्बेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट होंगे और मोनोडीहाइड्रो एस्कॉर्बेट बनाएंगे, और उसी के साथ वाटर इज अ बाय प्रोडक्ट व्हिच इज फॉर्म. मतलब ये एंजाइम APX, दैट इज एस्कॉर्बेट पेरोक्सिडेज एंजाइम, विल try to scavenge this H2O2 and convert it into water so that there are no ROS generation taking place. Everywhere if you see it is like that. Hydrogen peroxide with ascorbate will tend to, in the presence of enzyme APX, will develop water and MDA. Here also H2O2 with ascorbate in the presence of enzyme APX will tend to develop MDA and H2O. Okay, even in mitochondria also. So जहां पर भी H2O2 बनेगा या कोई भी reactive oxygen species बनता है, तो जैसे ये एक example है कि APX will come and will react by taking hydrogen peroxide and ascorbate and will tend to produce water. Okay, same way catalase, जैसे इधर SOD यूज किया है एंजाइम, ओके, इधर APX यूज किया है, तो ऐसे ग्लूटाथायोन रिडक्टेज या फिर कैटलेज, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होंगे जो ROS को क्या करेंगे, डिटॉक्सिफाई, जिससे यहाँ पर H2O2 को वाटर में कन्वर्ट किया गया है. ओके, सो ऐसे n नंबर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स आर बीइंग यूज्ड by the plant or by the cell organelles to detoxify the ROS species. So अगर हम लोग species को generate होने से नहीं रोक सकते तो at least हम लोग उसको scavenge कर सकते हैं. So plant if is not not into the process where it can prevent the ROS generation, if ROS is still generated by the mechanisms, so it will have another mechanism where it can detoxify those ROS species. Okay, another mechanism is osmotic adjustments or production of osmolytes, which is also called as signaling compounds. Now osmotic adjustments, when you talk about, see majorly whenever there is shortage of water or less amount of water in the plant will lose the turgidity. Okay, so turgor pressure बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, effect होता है. So there is accumulation of solutes mainly in the cell. Whenever there is accumulation in solutes, there is what you can say, the water potential goes down or decreases, due to which the plant will or the cells will undergo flaccidity. ठीक है, so क्या ऐसा accumulate होता है, solutes accumulate होते हैं, और क्या accumulate हो सकता है जिसके वजह से plant will show a response towards the stress is organic acids, inorganic cations, carbohydrates, amino acids, ऐसे बहुत सारे अलग अलग solutes, ऐसे बहुत सारे organic compounds आते हैं और वो लोग क्या होते हैं, accumulate हो जाते हैं, जिसके वजह से plant will show the will prevent the water loss. तो जितना भी पानी अभी थोड़ा बहुत है सेल में, वो solute के concentration की वजह से वो वहां पर ही रहेगा, वो ज्यादा लॉस नहीं होगा. ओके, इसके अलावा बहुत सारे कंपैटिबल सोल्यूट्स भी होते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन, बीटाइन, पॉलीऑल्स, ये सब भी क्या करेंगे, जब सेल में आ जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो इट विल प्रिवेंट द वाटर लॉस. तो जब भी ये सारे सोल्यूट्स एक्यूमुलेट होते हैं सेल में, तो दे विल नेवर अलाउ द वाटर टू लूज आउट ऑफ द सेल. ओके, सो दे विल maintain the turgor pressure in the plant and tend to what you can say, will not lose the water out of the cell. तो turgor pressure maintain करते हैं और उसी के साथ वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को, सेल स्ट्रक्चर को डिसफंक्शन होने नहीं देते, तो उसको नॉर्मल फंक्शन में रखने की कोशिश करते हैं. ओके, सो
एज ए सेड बहुत सारे सोल्यूट्स एक्यूमुलेट होते हैं जिसके वजह से वाटर लॉस हो सकता है, बट ऐसे भी सोल्यूट्स होते हैं जो एक्यूमुलेट होने की वजह से वाटर लॉस प्रिवेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर लॉस नहीं होगा। प्रेशर भी मेंटेन करेंगे, साथ ही प्रोटीन्स का सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन भी मेंटेन करेंगे, उसको डिसफंक्शन नहीं होने देंगे। नाउ स्ट्रेस की वजह से ही there is a disaccharide called trehalose which is being synthesized in the plant. Generally sucrose synthesize होता है, but stress की वजह से trehalose एक disaccharide है वो synthesize होगा जो एक osmolyte के जैसे काम करेगा। Osmolyte क्या होता है? It is a compound which will check the regulation of the or check the viscosity of the cell or the water loss of the cell, तो वो पानी को लॉस होने नहीं देगा। ओके तो ऐसे बहुत सारे डाइसैकराइड्स, ऐसे बहुत सारे शुगर्स सिंथेसाइज होते हैं स्ट्रेस कंडीशंस में, जो एक ऑस्मोलाइट के जैसे भी बिहेव कर सकते हैं या तो फिर एक सिग्नलिंग कंपाउंड के जैसे बिहेव कर सकते हैं। जिसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, बहुत सारे प्लांट्स जीन what you can say gene expression show करते हैं या gene regulation they will show, and due to that they will undergo some mechanisms where they will tolerate the condition of the stress. Okay, so that is what the signaling compounds, so osmolytes can act as a signaling compounds for that particular gene regulation. The another mechanism where plant can adapt themselves towards the stress is hormonal balance, you say, or hormones. Now there's one hormone which plays a much more important role in drought stress, and that is ABA, abscisic acid. Now when you talk about hormones, it comes to acclimation of plants. Acclimation का मतलब क्या होता है? Whenever plant tries to adapt the conditions according to the environmental condition, okay, तो खुद के body को adapt करने की कोशिश करेगा, that is acclimation. So tolerate करने की कोशिश करेगा majorly. So they will synthesize abscisic acid and they will inhibit ethylene production. ये दो चीजें होती हैं। Ethylene directly inhibit नहीं होता है, indirectly the ethylene is been inhibited, but there will be synthesis of abscisic acid. या फिर abscisic acid बनता ही है, but increase हो जाएगा उसका level. So there is a rapid increase in the abscisic acid level. Now इसके वजह से क्या होगा? Stomata close, plant growth inhibit हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्लांट स्ट्रेस की वजह से थोड़ा बहुत अडेप्टेशन कर रहा है। देखो प्लांट जब भी उसको डेसिकेशन स्ट्रेस होगा या ड्रॉट कंडीशंस हो जाएंगे फील्ड में, तो द वेरी फर्स्ट थिंग प्लांट विल डू इज दे विल स्टॉप द क्लोज द स्टोमेटा। नाउ व्हाई द स्टोमेटा इज बीन क्लोज्ड? गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं। किसकी वजह से गार्ड सेल्स फ्लैसिड होते हैं? क्योंकि पानी उनके अंदर नहीं जाता है, मतलब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर तुमने पूरा मैकेनिज्म पढ़ा होगा द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो उसमें दे हैव सेड दैट ABA when increases in the cell at that time, it will inhibit the movement of potassium and chlorine ion inside the guard cells. Whenever it is going to inhibit the movement of potassium and chlorine, ions are not going to travel inside the cell, so the cell is not going to have the water potential. If the cell is not having any water potential, it will undergo flaccidity, it will not become turgid. So as soon as the guard cells become flaccid, the stoma pore is closed, so it will inhibit the growth of the plant. Then another thing what abscisic acid does is it will regulate the aquaporin activity so that the water transport in the tissues should be manageable. मतलब जहां ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी प्लांट में है और किसी एक पार्ट में नहीं है, किसी एक पार्ट में ज्यादा पानी है तो वो स्टोर कर ले, ऐसा नहीं होता है। It has to manage the whole plant, no? तो leaves, stem, roots सबको मैनेज करना पड़ेगा। तो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? एक्वापोरिन एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। तो जहां पर जितना पानी जाना चाहिए उतना अलाउ करेंगे सेल्स, ओके, थ्रू एक्वापोरिन एक्टिविटी, और जहां पर पानी नहीं, जहां पर ऑलरेडी स्टोर है वाटर, वहां पर पानी नहीं जाना चाहिए, तो दे विल नॉट अलाउ द वाटर टू मूव टू दैट पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, then ABA also leads to the expression of some genes such as late embryogenesis abundant protein genes. तो जो genes late embryogenesis abundant proteins बनाते हैं उनका expression रोक देता है। क्यों? क्योंकि रोक नहीं देता है, synthesize करता है, मतलब express होते हैं वो genes। ऐसा क्यों? क्योंकि late embryogenesis है ना, मतलब क्या? Whatever the meristematic tissues are there, or if the plant is undergoing embryogenesis, it will stop or it will slow down the rate of embryogenesis.
Okay, so the proteins which are going to form the embryo, these proteins are going to decrease their rate so that whenever the drought conditions are relieved, okay, stress relieve हो जाएगा तो वो वापस से अपना फंक्शन रैपिड कर देगा. तो जब तक ड्रॉट है तब तक एब्सिक एसिड क्या करेगा, ऐसे प्रोटीन्स को, ऐसे जीन्स को एक्सप्रेस करेगा जो ये LAE मतलब लेट एम्ब्रियोजेनेसिस एबंडेंट प्रोटीन्स का या फंक्शन को रोक देगा. ये लोग कैसे काम करते हैं, चैपेरॉन एक्टिविटी के जैसे काम करते हैं. चैपेरॉन्स क्या होते हैं, चैपेरॉन्स आर मॉलिक्यूल्स विच प्रोटेक्ट द प्रोटीन्स. सो बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है. तो चैपेरॉन्स आर मॉलिक्यूल्स विच आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द प्रोटीन्स फ्रॉम, किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेंगे, फ्रॉम द डैमेज विच इज कॉज्ड ड्यू टू stress conditions, that is desiccation stress condition. And indirectly it is going to stop the biosynthesis of ethylene as well, which will क्यों वो ethylene को stop करेगा, क्योंकि ethylene leads to senescence. So senescence नहीं होना चाहिए. Plant adapt कर रहा है ना, वो थोड़ी ना चाहता है कि वो मर जाए. Okay, so when it wants to adapt, तो वो senescence के सारे enzymes, hormones मतलब ethylene को, it will inhibit the ethylene, where it will inhibit the senescence as well. So here if you see in this particular picture, ABA will lead to synthesis of many proteins. For example, BZIP, MYB, MYC. These are the proteins these are the genes mainly which are going to produce these MYCR1, MYCBR proteins, which are going to further induce the expression of IP3 signaling, then stomatal closure, ऑस्मोटिक होम्योस्टेसिस. मतलब ये सारे जीन्स को वो एक्सप्रेस करता है, एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से ऐसे प्रोटीन्स बनेंगे जो स्टोमेटा क्लोज करने में हेल्प करेंगे, फिर इथिलीन बायोसिंथेसिस को रोकने में हेल्प करेंगे, देन एक्वापोरिन्स और ऑस्मोलाइट्स का एक्टिविटी बढ़ा देंगे, ताकि प्लांट में स्ट्रेस कंडीशन के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो, वो प्लांट उसको टॉलरेट कर सके उस कंडीशन को. ओके, और अगर इसी ABA की वजह से ROS जनरेट होता है, ओके, तो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा प्लांट, एंड प्लांट विल टेंड टू डाई. ओके, सो for preventing this ROS generation also, sometimes ABA is biosynthesized in the plant so that they could stop the production of ROS and there should not be any damage to the plant. Okay, so till here we have seen the damage caused due to the plant. Okay, then so damage caused, damage में क्या तुम लोग याद रखोगे, स्टोमेटल क्लोजर, ग्रोथ अरेस्ट, ये इमीडिएट डैमेज होता है जो प्लांट में होता है. फिर जाइलम कैविटेशन, देन रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज एंड डिक्रीज, ROS फॉर्मेशन, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतना ज्यादा ROS बनेगा. ओके, तो उसको रोकना है हमको. ठीक है, देन morphological adaptations, 3 types of plants are there. मैंने यहाँ पे 2 मेंशन किए हैं, थर्ड इज tolerators, तो वो आगे जब पढ़ोगे तब. So desiccation escapers, which will escape the conditions, either they'll not show any adaptation, they'll develop the plasticity, means different types of structures of the plant parts. Then second type is desiccation avoiders, where they want to avoid the conditions such as xerophytic plants and the modifications of xerophytic plants. Then physiological adaptations, where how does the plant does not want that electron should be transferred from all the complexes present here. Okay, so it will bypass some complexes and will generate less amount of ATP, but with that they will not generate any ROS species. And if ROS species are still generated by some of the mechanisms, there are n number of antioxidant enzymes which will allow the plant to detoxify these ROS which is generated. So one of the enzymes is SOD, another enzyme is APX. Will, with the help of ascorbate, the ROS is detoxified. Okay, so this mechanism also plant has in their organelles. Then they can show mechanism like osmotic adjustments. They can produce osmolytes which can check the osmotic pressure of the plant cells. Then lastly, they will develop some hormones, or they will increase the production of hormones which could lead to the toleration of the stress during the drought conditions. Okay, and after this you're going to study is desiccation tolerators, where they're going to regulate their genes, and due to the gene regulation they are going to undergo the tolerance condition, where they're going to still, if there is drought condition, they're going to tolerate it.
Okay, and they're going to survive in that particular condition. But I'm not going to teach you this. इसके बाद जो भी टॉपिक होगा वो तुम लोग को हिमांशु सर एक्सप्लेन करेंगे. So he's going to go through the basic generic basis of the function, okay, or the broad conditions, and whatever the part is remained after this. So tolerators कैसे tolerate करेंगे condition को, या तो फिर जीन रेगुलेशन कैसा होगा, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे कैसा होगा, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स कैसे रोल प्ले करते हैं स्ट्रेस कंडीशंस में, वो सब तुम लोग को सर पढ़ाएंगे. So I guess you have gone through it. अगर कोई डाउट्स है, you may ask. Students, you can unmute yourself and ask. Yes, anybody has any doubt, they can ask. Otherwise, you just say if there are no doubts. Ma'am, no doubts we have. Okay. Ma'am, Okay. So, shall we close for the day? If nobody has any doubt. Okay, let us stop for the day. Take care, stay healthy, and now we meet on in the next week, right? That is on Monday, right? Yes or no, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Till then, take care and enjoy. Okay. thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Take care. Yeah.